In my life, I have given around more than 100 interviews. All right, Mr. Adnan, can you tell me something about you? और यार एक बार सिर्फ, क्या कहा मैंने? एक बार सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो आला वाली, भले राइटिंग बाद में जाके सीखते रहना। भले मैं नबील, आप प्रोफेशनल हो ना, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। इन माई लाइफ आई हैव गिवन अराउंड मोर देन 100 इंटरव्यूज़। कितने इंटरव्यूज़ दिए मैंने? 100 से ज़ायद इंटरव्यूज़ दिए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 95 to 97% जगह पर जो है मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। ये कह रहा हूँ पॉइंट। अच्छा, ये सारी सिलेक्शन पता है किस बेस पे होती थी? इंग्लिश के बेस पे। बंदे की चीज़ें बाद में पूछी जाती हैं भाई। पहला सवाल किया मुझसे कि जनाब, alright Mr. Adnan, can you tell me something about you? Well sir, my name is Adnan Anwar. If you just talk about my educational career and studies, that I have completed Masters in Human Resource Management from University of Karachi, and before that I completed my double graduation. The one is Bachelor in Commerce, and after that, that Bachelor of Education, I completed that. Well, you didn't used to be the good student in schooling, but afterwards, when I completed my English language course, and I started learning English language, so I started giving the concentration on my study and my career. I got busy, I mean, in making my career, okay? I was very much inspired by some of the people. I just made a mentor in my life. इतना जब आप बात कर रहे होते ना, बंदा वहीं पे आधा हो चुका होता। अभी देखो, सीधी सी बात है, अंग्रेजी काबिलियत ना, आपके अकल की काबिलियत को नापने का तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बहस है, ठीक है? मैं भी कहता हूँ अंग्रेजी से ना नापे, लेकिन मसला है ना हमारी कौम का, कोई बंदा अगर इंग्लिश बोल दे तो वो क्या लगता है? पढ़ा लिखा भी लगता है, टैलेंटेड भी लगता है, सब कुछ मतलब, और रिश्ता तो ऐसे ही आता है। फिर इंग्लिश पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये ज़ुबान नहीं है, इट्स योर इमेज, it's your career, it's the money, it's something like that bombastic personality of yours. Okay? Once you become a great speaker of English language, come on, whatever you are, just go and check your market worth. Check your face value with there. Okay? Whatever your profession is. If you're a doctor, that's another matter. If you're an engineer, that's another matter. If you're a chartered accountant, another matter. If you're a YouTuber, another matter. If you're a cricketer, singer, these are the another matter. The first thing is that you speak in front of the people, right? And once you speak in a beautiful English. Of course, the people would get inspired by you. Okay?